All right, so we started transformations in our last session. We discussed the three different transformations that we have in our syllabus: translation, reflection, and stretch. And for each of them, we have horizontal and vertical transformation. So there are two types for each of them, horizontal or vertical. Okay, so in total, we're looking at six transformations. 3 times 2, 6 transformations हमारे पास total है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं. Now, first of all, we learned how to understand each of these transformations. Stretch एक नहीं है, वो हमने last time देखा था. So कैसे आपने देखना है? In order to describe these transformations, you have to use some specific terminologies. For example, for describing translation, you have to write down the translation vector. उसको words में नहीं लिख सकते, आपको vector लिखना होगा. For describing reflection, you have to write down the line of reflection. And for describing stretch, you have to write whether the stretch is along x-axis or y-axis, depending on whether it's horizontal or vertical. And along with that, you have to write down the scale factor. Okay? So describe करते हुए, you have to keep these things in mind. Then we looked at how these transformations are relevant for functions. Functions से किस तरह से connect करेंगे इनको? So we looked at one function in particular, that was f of x equals x squared. And we saw how that function moves vertically for each of those different transformations. Okay, so it's not there right now. Okay. So we looked at this graphically yesterday. I'll just summarize this now. I won't show that again, but there were three different things that were happening to this function outside f of x. Outside f of x, एक चीज ये हो सकती थी कि आप कोई number plus या minus कर रहे हो, उससे क्या होता है? Translation होती है. If you multiply by a number outside, that makes the graph stretch along the y-axis, and if you multiply by a negative sign, that means that there's a reflection in the line x-axis. X-axis में reflection होती है तो vertical reflection. ये तीन transformations हमने देखी थी last time. Now let me just write those down here. Minus होगा तो क्या होगा उससे? You'll have reflection. So remember, we're talking about vertical transformations. So all of these are vertical. All of these are vertical transformations. So this is vertical reflection. Or let me be more specific here, with line of reflection x-axis. This is the first thing that happens. If you multiply by a number, in this case, you have vertical stretch. Now, if you were describing this, you would either write along y-axis or parallel to y-axis. And what's the stretch factor or scale factor in this case? You would say the scale factor is this number a. So whatever that number is, that's going to be your scale factor. अगर आप 2 से multiply करो, तो scale factor 2 है, 3 से multiply करो, scale factor 3 है, and so on. This is the second transformation. And then the last one is
vertical translation. For translation, you have to write down the vector that will look like this: 0 plus minus b. If you have plus b, that means it's b units upwards. If you have minus b, the graph moves b units downwards. These are the three transformations that we have in the vertical direction. All right. Now, what happens to the coordinates when you do one of these transformations? So, आपके जो coordinates होते हैं original graph के, let's see how they change. If the coordinates of the original graph are x, y, for instance, if there's a point on the original graph that's x, y, if you have reflection in x-axis, what happens to the points? The x coordinates remains exactly the same, but the y coordinate changes its sign. So if it was positive, it becomes negative. If it was negative, it becomes positive. Right? जो ऊपर वाला point है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला point ऊपर चला जाएगा. तो essentially y coordinate को आप minus sign से multiply कर रहे हो. All right? If you have stretch and you have a point on the original graph that is x, y, again, x is not going to change, but the y coordinate is going to get multiplied with a. So if there was a point which had a y coordinate of 2 earlier, now if the stretch factor is 3, you would say it's 2 times 3, 6 पे चला जाएगा वो. Okay, x coordinate unchanged रहेगा, y coordinate बस वो scale factor से multiply हो जाएगा. ठीक है? And what about translation? In translation, in vertical translation, x coordinate remains the same. Y coordinate में आप वो number add या subtract कर दोगे जो भी वहां पे add subtract हो रहा है. These are the three vertical transformations that you have that you need to keep in mind now. All right, any issues with this? ये हमने कल देखी थी. So this is their summary. Now, if you understand the logic or not, what matters at the end is that you have to remember these transformations. आपको ये याद करनी है in any case. आपको समझ आ गई थी वो लॉजिक किस तरह से हो रही है या नहीं आई थी, समझ आ भी गई है, आपको फिर भी याद करनी है. Right? You won't have enough time during the exam to try to figure it out logically. You have to remember these. आपको फौरन से आपको जहन में आना चाहिए. मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रेच होती है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं रिफ्लेक्शन होती है, प्लस माइनस करते हैं तो ट्रांसलेशन होती है. फंक्शन के बाहर ये सब कुछ हो रहा है तो दिस इज वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन. Okay, any problem with this? No. Now let's think about what happens if we have some horizontal transformations. Horizontally अगर आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है? Let's think about that. Again, let's take an example here. Let's say we have a function f of x and that looks like this. F of x equals sorry 3x plus 2. That's a linear graph. Linear से इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, वो stretch का पता नहीं चलता इतनी आराम से. So we want some quadratic function. X square minus 3, or let's change this a bit. Let's say minus 3x अगर इसको कर दें. That looks like this. Okay. So this is a quadratic function that I have. X square minus 3x. F of x is the original graph. Right? This is how the graph looks like originally. People at the back, can you read what I'm writing there on the left side? F of x नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? Yes? Okay. Now if I were to change this such that something changes inside the function. F of x के बाहर नहीं अब हम करें, f of x के अंदर कुछ change करें. So x के साथ for instance आप कुछ कर दो.
plus something or minus something. Let's say if I do plus 3, for instance, what is going to happen to this graph? So let me actually do 2 for now. X plus 2, f of x plus 2. What is going to happen to this function? It's going to go translate to the right. To the right. X plus 2 करने से क्या होएगा? रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री में हमने यही ट्रांसफॉर्मेशंस की हुई हैं. क्या होता था? प्लस करने से लेफ्ट पे जाता था. प्लस करने से आपका ग्राफ क्या होएगा? लेफ्ट पे जाएगा. हॉरिजॉन्टल में इट्स गोइंग टू वर्क द अदर वे अराउंड. We have discussed the reason for this earlier. Let me quickly go through that again. If you input x equal to 0 in the original function, okay, let's say you have f of x and you have f of x plus 2. These are the two functions that we have, right? If we input x equals 0 in the original function, what is that going to give us? X equals 0 डालेंगे तो उससे हमें मिलेगा f of 0. X equals 0 input करेंगे, that gives us f of 0. Now, how can we get that same value from the second function जो हमने change कर दिया है? x की कौन सी value input करेंगे तो हमें f of 0 मिलेगा? We'll have to input x equal to minus 2 there. Minus 2 input करेंगे तो minus 2 plus 2 is going to become 0 और वो आपको देगा f of 0. So जो value मुझे पहले 0 पे मिल रही थी, now I'm getting that value at minus 2. Similarly, if I were to input 5 in the original function, that would give me f of 5. f of x plus 2 में कौन सी value input करने में मुझे f of 5 मिलेगा? I'll have to input x equal to 3 there, and that is going to give me f of 5 here. So whatever value I was getting at a particular value of x earlier, now I'll be getting that same value 2 units to the left. Okay? 2 units कम करना पड़ेगा, उस पर वो same value मिलेगी. So अगर हम f of x plus 2 कर रहे हैं यहाँ पे function के अंदर, this is a horizontal transformation. What kind of transformation? It's translation. Graph आपका shift करेगा 2 units to the left. Plus करने से left पे move करेगा graph. Is that okay? Now let's look at how the graph looks like here. This is the transformed graph, the blue one. Red वाला आपका original graph था, वो shift हो गया 2 units to the left, and it looks like this blue graph now. f of x plus 2 आपका ये हो जाता. Make sense? Now using exactly the same logic, if we were to have x minus something here, let's say minus 5, अब minus करने से आपका उतना ही graph right पे चला जाएगा. If you do minus 5, the graph goes 5 units to the right. Is that okay? So this is what happens in horizontal translation. Plus करने से left पे, minus करने से right पे. Yes? Horizontal में plus means left, minus means right. Okay? Plus करने से left पे जाएगा, minus करने से right पे जाएगा. Horizontal में सब कुछ उल्टा होता है, just remember that. Okay? Plus करने से left पे जाएगा, minus करने से right पे जाएगा. Okay, now let's think what happens if we multiply this by a negative sign. Let's say minus x. What about this case? So what would be your guess? Minus करने से क्या होता था? Reflection होती थी. अब क्योंकि अंदर कुछ हो रहा है तो this is horizontal reflection. Horizontal reflection मतलब line of reflection क्या होगी? Y axis. Y axis में आपका graph reflect हो जाएगा. And it's the same idea. The value that you were getting at x equals 3 for instance earlier, अब वो आपको minus 3 पे मिलेगी. जो minus 2 पे मिल रही थी वो plus 2 पे मिलेगी. तो राइट वाले पॉइंट्स लेफ्ट पे चले जाएंगे, लेफ्ट वाले पॉइंट्स राइट पे चले जाएंगे. ओके? और ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी वाई एक्सिस के अंदर.
तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, द ग्राफ गेट्स रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस. y एक्सिस में ये ग्राफ आपका रिफ्लेक्ट हो गया. Is that okay? Blue graph is the original graph. Red is red graph is the original graph. Blue is its reflection in the y-axis. Any problems? No? Okay, now what if we change this to f of 2x, for instance? Now we have 2 multiplied by x inside the function. x की जगह पे क्या कर दिया हमने, 2x कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. रिमेंबर, मल्टीप्लाई करने से क्या होता था, स्ट्रेच होती थी. मल्टीप्लाई करने से स्ट्रेच होता है, लेकिन अब फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगी. So we know that it's horizontal stretch, so it's stretch along x-axis. What about the scale factor? Scale factor 2. हॉरिजॉन्टल में उल्टा होता है सब कुछ, राइट? 2 नहीं होगा, कुछ और होगा. क्या होगा? 1/2. It's reciprocal of that. It's not 2, it's 1/2. How do we think about this? Again, the same logic. अगर मेरे पास एक फंक्शन है, if I have one function which is f of x and the other function is f of 2x, now if I were to input x equal to 2 here, or let's say 3 here, that would give me, no, that's going to be a bit detailed. Let's say 4. Let's say if I were to input x equals 4, that would give me f of 4. Now what value of x would I need to input in this second function to get that same value? सेकेंड फंक्शन में मुझे वो सेम रिजल्ट किस पे मिलेगा, x इक्वल्स 2 पे मिलेगा. तो 4 वाला पॉइंट कहां चला गया, 2 पे चला गया. ऑलराइट. सिमिलरली, if I were to input x equal to 6 in the original function, that would give me f of 6. f of 2x के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू ऑफ x इनपुट करनी है टू गेट दैट सेम रिजल्ट? यहाँ पे x equals 3 इनपुट करना पड़ेगा, एंड दैट वुड गिव मी f of 6. तो बेसिकली जो भी वैल्यू मुझे पहले एक वैल्यू ऑफ x पे मिल रही थी, अब उसके हाफ पे मिल रही होगी. मेक सेंस? So the point that I have here, for instance, at 3, जो ये पॉइंट है 3 के ऊपर, ये कहां चला जाएगा, ये 1.5 पे चला जाएगा. So maybe somewhere around here. ओके, 1.5 पे चला जाएगा. सिमिलरली ये मेरे पास एक 4 पे पॉइंट आ रहा है, ये 4 पे पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, दिस इज 4. ये कहां चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा. सो ग्राफ आपका एक तरह से श्रिंक हो रहा है, राइट? सो इट्स अ स्ट्रेच विद स्केल फैक्टर 1/2. उसका रेसिप्रोकल आपका स्ट्रेच फैक्टर होगा, स्केल फैक्टर. Now let's draw that graph. This is how it looks like. So you can see the point that we had at 3 earlier, that moves to 1.5. 3 वाला पॉइंट 1.5 पे चला गया. 0 तो वहीं पे रहेगा, बिकॉज 0/2 is still 0. ऊपर भी आप अगर कोई पॉइंट लें तो आप देख सकते हैं उसी तरह से पॉइंट्स हाफ में जाते जाए. फॉर एग्जाम्पल ये जो 4 पे पॉइंट है, दिस पॉइंट हियर 4 and 4, that moves here to 2 and 4. ये 2 पे चला गया पॉइंट, राइट? तो 4 वाला पॉइंट 2 पे चला गया, एंड सो ऑन. दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर एवरी सिंगल पॉइंट ऑन दिस ग्राफ. एक्स कोऑर्डिनेट उसका हाफ हो गया. Any problem with this? So when you multiply by a number inside the function, x को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, that would be horizontal stretch with scale factor
that is reciprocal of that number. Okay. Now let me summarize all of that here now. So now we have horizontal transformations. I'm just going to copy all of this. Just change this slightly. All right, so we saw what happened with vertical transformations, right? Now let's see what happens with horizontal transformations. So now we have horizontal transformations. Now, first of all, the graph is now going to move horizontally, right? So the graph moves horizontally. In this case, only the x coordinates change, the y coordinates do not change. And some operation is applied outside, no, sorry, inside f of x. पहले outside था, अब क्या होएगा? Now it's going to be inside f of x. तो अब x की जगह पे कुछ और आ रहा होगा. Okay? x को आप किसी और चीज से replace कर दोगे. Now, what are the possible functions that could be applied inside? You could say f of, you could have y equals f of minus ax plus minus b. So now you have something changing inside the function. You could either multiply by a negative sign, or you could multiply by a number, or you could multiply, or you could add or subtract some number inside. ठीक है? माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होएगा? You will have reflection, but now this is horizontal reflection. With line of reflection, y-axis. When you multiply by a number inside, that's a stretch, but now this is horizontal stretch. How would you describe it? It's along x-axis. Horizontal का मतलब है along x-axis. With scale factor, what's the scale factor? 1 over a. Scale factor will be reciprocal of that number, 1 over a. ठीक है? And then you have horizontal translation. And that will look like this, minus plus b 0. ओरिजिनल फंक्शन में यहाँ पे जो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, अगर उसके अंदर प्लस b था, इसका मतलब है you're moving to the left. And if you have minus b there, that means you're moving b units to the right. Any problem with this? Let's take an example for translation. अगर आपके पास कुछ इस तरह से फंक्शन होता, y equals f of x plus 3, what would be the translation vector for this? Translation vector is going to be minus 3, 0. Okay? Minus 3, 0. Translation vector में आप minus 3 रखेंगे, because translation vector में minus 3 का क्या मतलब है? 3 units to the left. Is that okay?
So this is the summary of horizontal transformations now. देखिए ऊपर लिखा हुआ था प्लस माइनस बी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है माइनस प्लस बी, तो ऊपर वाला साइन और यहाँ पे जो फंक्शन में साइन है और जो वेक्टर में साइन है वो ऑपोजिट है एक दूसरे के. If you have plus in the function, you have minus in the vector. If you have minus in the function, you have plus in the vector. It's the other way around. Any questions on this? Okay, now what about the coordinates? What happens to the coordinates when you do these transformations? So what happens with reflection? Horizontal reflection. Reflection in the y-axis. क्या होएगा? Minus xy. Y coordinate change नहीं होएगा. X coordinate minus से multiply हो जाएगा. So this is going to be minus x and y. If you have stretch, again, the y coordinate remains unchanged. What about the x coordinate? It's x over a. Scale factor को बस आपने multiply कर दिया x के साथ. So that's 1 over a times x, which means x over a. All right? And then you have translation. Translation में क्या होएगा? X, y is going to go to x minus plus b, and y will remain as it is. Again, I'm writing minus above and then plus at the bottom because plus जो है वो correspond करेगा इसके minus को, और जो original function में minus होगा इसके plus के correspond करेगा. These are horizontal transformations. Any problem with any of this? Clear है सबको? Yes? We have 18 minutes. We could do an example or ये ट्रांसफॉर्मेशन सबको समझ आ गई? इनमें कोई मसला नहीं है? We'll do some questions tomorrow. I'll copy some questions here in the OneNote book, OneNote page, OneNote notebook. आपने घर जाके वो notebook देखनी है, उसमें questions pasted होंगे. Today is Wednesday. Our next class is on Friday. Before Friday, you have to attempt all of those questions. Okay, there will be like 6-7 questions. इतना time लगेगा 30 minutes max. आप कर सकते हैं वो सारे, तो आपने करके आने. Yes. Did anyone have the same problem? और को issue आया इस तरह का कोई? Sorry? Refresh करके कुछ नहीं हो रहा? उसको रिफ्रेश करके देखें, वो स्क्रॉल डाउन करके देखें, रिफ्रेश होता है उससे. दूसरा एक है कि अगर आप वन ड्राइव डाउनलोड कर लेना, तो अक्सर इसके वन नोट के इश्यूज आते हैं. जो अगर आप वन ड्राइव डाउनलोड कर लेना तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं. तो हैव टू एप्लीकेशंस ऑन योर फोन, वन ड्राइव एंड वन नोट, बोथ ऑफ देम, बिकॉज वो जो सेव करेगा ना फिर वन नोट को, वो आपकी वन ड्राइव के अंदर सेव कर लेगा. तो अगर आपके दोनों चल रहे हैं फोन पे तो वो रियल टाइम में अपडेट होता जाता है फिर. Okay. Okay. So these are all the transformations that we need to know about. अब आपने कैसे याद रखना है? फंक्शन के बाहर कुछ होता है तो वो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फंक्शन के अंदर कुछ होता है तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? ट्रांसलेशन. मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, or sometimes you can divide as well, by the way. So multiply or divide by a number. That would mean stretch. Multiply by
A negative sign, that means reflection. Is this all right? What if I have something like this? F of, or let's say minus 3 f of x. So you have a function y equals f of x, and let's say when transformed, it becomes minus 3 f of x. What transformation is this? Stretch and reflection. So how do we write it down? इसको describe करना हो तो क्या करते? We'll say there's a vertical stretch. You could say that's a stretch along y-axis. What's the scale factor? With scale factor 3. And number 2, what else is happening? Vertical reflection minus बाहर multiply हो रहा है. Vertical reflection, उसमें line of reflection क्या होती है? X-axis. So that's reflection in the line x-axis. Reflection in x-axis. It's a vertical reflection, लेकिन जो line of reflection है, that is x-axis. Is there another way to describe this transformation? We could also describe it as a single transformation. We could say it's a stretch along y-axis with scale factor minus 3. So these two transformations combined are equivalent to doing just a single stretch with scale factor minus 3. तो आप उसको इस तरह भी सोच सकते थे, because remember negative scale factor से क्या होता था? आपकी फिगर दूसरी साइड पे चले जाती थी, तो इसमें रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच दोनों हो जाएंगे एक साथ. ऑलराइट, आप इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हो. Any problem with this? No? Okay, now I'm not going to go on and do any questions right now. Questions हम next class में करेंगे. But for now, what we have done is we have only looked at what happens when we do one transformation at a time. Right? अगर माइनस लगा उससे रिफ्लेक्शन हो जाती है, नंबर से मल्टीप्लाई करें उससे स्ट्रेच हो जाती है, कोई नंबर ऐड से ट्रैक कर ले उससे ट्रांसलेशन हो जाती है. What if you have something like this? What if you have 4 minus 4 f of x minus 3 or plus 3? What is happening here? You have reflection, stretch, translation, all three of them. What if you have f of minus 5x plus 8? You have 3 horizontal transformations here, right? What if you have minus 6 f of minus 2x plus 7 plus 3? You have everything happening here, right? So दोनों डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन भी, स्ट्रेच भी और ट्रांसलेशन भी. Now what do you do in such cases? The problem is, how do you decide where to start from? Right? कहाँ से start करें? सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें? That's the problem, right? Left side से शुरू करें? Not necessarily. Vertical में yes, लेकिन horizontal में मसला है. Horizontal में remember सब कुछ उल्टा होता है, यहाँ भी उल्टा होता है. So we need to understand the order of transformations. When we have multiple transformations happening at the same time, there's a specific order that we have to follow for that. All right? अगर ये इस तरह से standard form के अंदर कुछ है, आपने order का देखना. Let's think about that. Order of transformations. Order of transformations. Now there could be 3 different cases. One possible case is
that you have some vertical and some horizontal transformations, or maybe one vertical and one horizontal for now. एक vertical, एक horizontal. For example, something like this: 3f of x plus 2. What is happening here? You have two transformations: vertical stretch, scale factor 3, and horizontal translation 3 units, 2 units to the left, 2 units to the left. Vertical stretch है, horizontal translation है. दो transformations आपके पास यहाँ पर हो रही है. Now, what do we do first? Should we do stretch first? Should we do translation first? How do we know that? Remember, vertical से क्या होता है? Y coordinates change होते हैं. Horizontal से क्या होता है? X coordinates change होते हैं. These two are independent of each other. It does not matter whether you do vertical पहले या horizontal पहले. It does not matter. So when you have some vertical and some horizontal transformation, इनका जो आपस में order है, that doesn't matter. You could start with vertical or horizontal. That would not make any difference. End result आपका same आएगा. ठीक है? कोई भी आप पहले कर सकते हो. Let me write that down here. So when you have vertical and horizontal transformations, you would say the order between vertical and horizontal transformations, that does not matter. Now, what if you have multiple vertical transformations? Multiple vertical transformations. So for instance, you could have minus 4f of x plus 5. You have stretch, reflection, and translation here. What do we do first and what do we do second? What do we do third? How do we decide that here? Vertical transformations, where the order of transformations works the same way as the arithmetic order of operations, BODMAS. Multiplication वाले पहले होंगे और addition subtraction बाद में होगी. Okay, जो BODMAS आपका है उसी तरह से multiplication division पहले, addition subtraction बाद में. तो multiplication से कौन सी transformation हो रही है यहाँ पे? Stretch and reflection. So you're going to start with either of them. That doesn't matter. So do stretch or reflection first. It doesn't matter which one of the two you choose. In दोनों में आपस में it doesn't matter. दोनों multiply करने से हो रहे हैं. Reflection stretch में से कोई भी आप पहले कर लें. And then you do translation after that. इसमें अगर उल्टा कर लेंगे, that would not give you the same result and that would be wrong. ट्रांसलेशन पहले करेंगे और स्ट्रेच बाद में करेंगे तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा और वो गलत होएगा. Is this all right? Now, let's see what happens with multiple horizontal transformations. Multiple horizontal transformations. For example, if you have minus 5x plus or minus 2, you have horizontal, reflection, stretch, and translation here. What's your guess? What do we do first? क्या करें? Do translation first, right? So उल्टा होता है, बस इसको उल्टा कर दें. Do translation first. Horizontal में it works the other way around. Do translation first.
and then do stretch or reflection because it's horizontal. Horizontal में it works the other way around. या दूसरा पहले आंसर सही नहीं आएगा, रिजल्ट सेम नहीं आएगा. यहाँ पे ट्रांसलेशन पहले करेंगे, स्ट्रेच रिफ्लेक्शन बाद में करेंगे. Is that okay? It's the same logic. अगर आपके पास ओरिजिनल फंक्शन f of x है, उधर आपके पास -5x-2 आ रहा है, इसमें आप x की वैल्यू अगर 0 इनपुट करते हो तो क्या मिलता है? f of 0 मिलता है. How can you get f of 0 from this? Put this equal to 0. x क्या होगा? -5x equals 2. x equals, sorry, इसको ऐसे लिख लेते हैं. Let me give another example instead. Let's say यहाँ पे 0 के बजाय 1 कर लें. That will make it clearer. Let's say यहाँ पे x equals 1 इनपुट करते तो क्या आता? x equals f of 1 आता. यहाँ से f of 1 कैसे आएगा? अगर हम -5x-2 1 के इक्वल होएगा. अब 1 में क्या करेंगे हम? 2 ऐड करेंगे. ऐड पहले कर रहे हैं यहाँ पे 1 में. उसके बाद क्या करेंगे? Divide by 5 करेंगे. And that will give us the value of x. That's going to give us that same result. तो यहाँ पे देखें, +2 पहले कर रहे हैं वहां पे जाके. जब रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले ऐड कर रहे हैं, उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं. इसलिए ट्रांसलेशन हैज टू हैपन फर्स्ट एंड देन स्ट्रेच एंड रिफ्लेक्शन. Okay, so that's the logic behind it, but you have to memorize this in any case. ये आपने याद रखना है. ट्रांसलेशन में हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन में सब कुछ उल्टा होता है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी उल्टा है. ओके, वर्टिकल मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, उसमें स्ट्रेच रिफ्लेक्शन हैपेंस फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेशन. मल्टीपल हॉरिजॉन्टल में ट्रांसलेशन पहले होएगी और स्ट्रेच रिफ्लेक्शन बाद में होएगी. Now, how would you describe this transformation? F of -5x-2. How would you describe this transformation? What happens first? You'll say this is a translation with vector 2, 0. 2 units right. That means 2. On the 2 will be the x component, 0 y component. Number 2. और क्या हो रहा है? Just stretch. That's not enough. किस डायरेक्शन में stretch? Stretch along x-axis with scale factor. You could just directly do -5 scale factor here. Sorry, not -5. -1/5, not -5. -1/5. Is that okay? Now, for the next class, what you have to do is, you have to write down the order of transformations for this. Write down all the transformations that are happening in the correct order. ये लिख ले. -6 f of -2x plus 7, outside you have +3. इसका आपने order of transformations लिखना है. सारी ट्रांसफॉर्मेशन लिखने, इसमें क्या क्या हो रहा है. Okay, this is one thing, and by the time you reach home, you'll have a lot of questions added to this notebook. फंक्शंस वाले सेक्शन के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे पोस्टेड होंगे, ऐड हुए होंगे इसके ऊपर. यू हैव टू डू देम बिफोर फ्राइडे. फ्राइडे वाली क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह. कैन समबडी आल्सो सेंड दोस क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप? वन नोट पे पोस्ट हो जाएंगे. कैन समवन प्लीज टेक पिक्चर्स ऑफ देम एंड पोस्ट देम ऑन व्हाट्सएप? यस समवन. Sorry? Function transformations are not coming in the test. Functions तक आएगा sir.
All right, that's it. I'll mark your attendance and then you can leave.